First of all, welcome all again for sparing your time. I hope it is worthwhile. I'll try to keep it simple and make use of Hindi and English, both languages, so that everyone is comfortable. So today we have an interesting thing here. It's very interesting concept. Some of you might relate to it. And I hope आप लोगों को इसमें से कुछ takeaway मिलेगा आज. Whoever is here will get to see the digital world or the app world or the products world from a different pair of eyes. You will learn something, I hope, so that you get some fresh perspective. Okay. So it's called the hooked model, and we'll just begin in a few seconds. So as we see here, we are starting with this smart statistic. Most of us, all of us are using smartphones. So we see a big claim here, right? 79% of the people use smartphones in the first 15 minutes, and we are hooked to our smartphones, face it, believe it or not. How many of us do here? I basically pretty much do it. Okay. So we are starting with some awareness as we always, so that we understand the topic better. क्योंकि आज का topic hook model है. हम कैसे hook हो जाते हैं फोन में, right? How are we being fished? Not PHISHED. PHISHED तो scamming होता ही है. That is phishing, that you get hooked for secret data through websites when you browse. लोग उसमें से डेटा चुरा लेते हैं, उसको फिशिंग बोलते हैं. I'm not talking about that phishing. I'm talking about the actual phishing. FISHING. This is phishing where we don't know we are being fished. This is place where we don't know we are being hooked. Okay, let's see how it happens. How hooks work. What is habit zone? So there are something called as habits in our brain. ठीक है. रिस्पॉन्सेज ऑटो रिकॉर्ड हो जाते हैं जब भी हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं. ये हमने पहले भी क्रिएटिव थिंकिंग वर्कशॉप में भी देखा था. हाउ बेसिकली पैटर्न्स आर फॉर्म्ड. जब पानी प्लेटू पे गिरता है तो फर्स्ट टाइम इट फॉर्म्स अ पाथवे. Then second time the water falls, it follows the same path, tries to follow the same path. इसी तरह से हैबिट्स क्रिएट होते हैं. हम कोई टास्क एक बार करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, फिर बिफोर वी नो इट अ हैबिट इज फॉर्म. Basically brain stores responses and make them automated. It's like automation testing, जैसे टेस्टिंग में करते हैं. तो सारे केसेस लिख लिए, एक स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5, और ब्रेन विल रिकॉर्ड इट inside the basal ganglia, basically technical word for that part of the brain. They are nothing but behaviors done with little or no thought. एक habit बन जाता है. You see on the right side a graph, a beautiful graph, where you see where is the habit zone. So on the left side, the vertical axis is the frequency. The less you use the product and from the more usage of the product or any habit. Let's say this graph is in specific to the apps. And on the bottom x-axis, you have the perceived utility from less to more, where how usable or how useful do you find the app. So utility is nothing but the usefulness, and frequency is the frequency of use. जैसे 2 घंटे हम गूगल यूज करते हैं रोज फॉर एग्जांपल, या 2 घंटे अलग अलग एप्स यूज करते हैं. सो दिस इज द हैबिट जोन वेयर यू आर हुक्ड. we'll understand more as we go along, and we'll see a lot more examples if possible. Habit forming products alleviate users discomfort by relieving a pronounced itch. है ना. Itch is nothing but you want to, जैसे हमें खुजली होती है, राइट, वी जस्ट वांट टू स्क्रैच दैट इच इमीडिएटली. सो इट्स लाइक दैट. आपको एक क्रेविंग होती है और आप इंस्टाग्राम निकालते हैं, राइट, एंड देन यू स्क्रॉल एंड स्क्रॉल एंड स्क्रॉल, एंड योर ब्रेन कीप्स रिलीजिंग डोपामाइन, एंड यू गेट अ सेंस ऑफ रिलैक्सेडनेस, और यू गेट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, राइट, सेंस. तो हैबिट फॉर्मिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दे फाइंड द यूजर्स डिस्कम्फर्ट एरिया and they relieve it by forming a product around it. जैसे सर दर्द के लिए एनासिन, same thing. So they find a solution for your itch. Companies find, or the habit forming products solve your itch by forming a product around. Why is this good for business? Why habit forming products are good for business, or why this is the new buzzword? इसमें नया क्या है?
है ना। जैसे इतने सारे हम वेबसाइट्स यूज करते हैं, इतने सारे ऐप्स यूज करते हैं, तो सब पे तो हम हुक नहीं होते हैं। कई सारे ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। कई सारे ऐप्स हम सुनते हैं और डाउनलोड भी नहीं करते हैं, right? उनके एडवर्टीजमेंट सुनते हैं। कितने सारे ऐप्स हम यूज करते हैं बट मंथ में एक आधी बार यूज करते हैं, और इन लेट्स से इन 1 quarter और 1 6 months whenever we need to use it. But there are some apps who are absolute mind monopoly, जिनके बिना आप रहते नहीं हैं। We know the names. The names could be different. सबके लिए अलग अलग होंगे। किसी को फूड का ज्यादा काम पड़ता है तो वो ऐसा है, किसी को रिटेल का ज्यादा है। अलग अलग यूजेस से हमारे, अलग अलग चॉइसेस से हमारे पास एप्स होते हैं। बट देर आर सम एप्स विच आर एब्सोल्युटली डोमिनेट अवर टाइम। तो आप अगर आपका स्क्रीन टाइम देखेंगे डेली का 2 घंटा है या 1 घंटा है या किसी का 4 घंटा भी है, तो उसमें कौन कौन से एप्स हम यूज करते हैं। वाई हैबिट्स आर गुड? इट्स अ शट डाउन मार्केटिंग मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर। शटडाउन मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका ऐप ही ऐसा है, इतना हुकिंग है, इतना हुक्ड ऐप, हुकिंग ऐप है कि द कस्टमर्स कीप रिटर्निंग फॉर मोर एंड मोर, एंड यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू एनी मार्केटिंग। यू रियली कैन शट डाउन मार्केटिंग एंड डू अवे विद इट। आप मार्केटिंग बंद कर सकते हैं और यूजर्स विल स्टिल कम टू योर प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव दैट, बेसिकली दे नो दैट योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग देयर इश्यू. It's a supercharging growth because it is always a viral model. आप जो एप्स आपको पता है एडिक्टिव होते हैं, आप 2 घंटे स्पेंड करते हैं तो यू फॉर्म अ कम्युनिटी अराउंड इट। आप गेम्स खेलते हैं तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं, राइट। फॉर वायरल प्रोडक्ट्स यू डू सेल्फ मार्केटिंग। देन इट्स अ प्राइसिंग नीश। प्राइसिंग नीश का मतलब होता है कि वंस यू हैव got your fishes hooked, once you have got your customers hooked, you can really go any price niche. Because we saw that Facebook and Google are typically increase their advertising prices now every year. They change their policies every year. Why is it so? Because we are hooked. When they launched, they were launched for free. They are still for free. But if you see their algorithms now, especially their advertising algorithms, तो वो सारा का सारा how they want to control it is how they control it, because we are already hooked, because we are dependent on them for certain reason. तो आप अपने पसंद का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. Why habits are good for business? Increase customer lifetime value. Lifetime value का मतलब होता है कि आज आपके पास एक कस्टमर आता है, आप वो एक एक्स अमाउंट की प्राइस की चीज खरीद के जाता है, ठीक है, बट देन द कस्टमर कम्स बैक and comes back again and comes back again in March and then comes back again in April or many times a month. This is lifetime value. ठीक है, there is an estimated lifetime CLTV, customer lifetime value in any industry. किसी की 3 साल होती है, किसी की 1 साल होती है, किसी की 6 महीने होती है, but there is a lifetime value you associate with the customer. And then there is a mind monopoly. Mind monopoly is nothing but dominate customers users mind for a particular word. For example, हम सर्च के बारे में सोचते हैं तो हमें गूगल याद आता है हमेशा, right? So it just absolutely brutal monopoly that Google has on our minds for search. Similarly, Stack Overflow हमें याद आता है जब हमें टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम हुआ. So there are people who have monopolized our minds for that particular area or that particular word. So these are all habit forming. और उससे क्या क्या फायदा होता है, ठीक है. Let's see. There is a concept of vitamins and painkillers. This is quite an interesting concept. दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, वी कैन से vitamins और पेन किलर्स. Vitamins are, you can see they appeal to users health. There is some description on the screen. They appeals to users emotional needs, right? जैसे हम लोगों को पता है कि आप तबीयत खराब होती है एब्सोल्युटली तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. We take the diagnosis, we eat the medicine, and then we get it over with, and we are healthy, right? But what's with the vitamins? Vitamins is just additional supplement we take. We take Protein X, we take Boost and Horlicks, and we take multivitamin capsules. Right? All these are not like good to have, but it's typically not doctor prescribed, or typically you read it in a magazine, or typically you want to be more fancy with your health. So vitamins are not absolute necessity, whereas painkillers are. Okay. Painkillers solve an obvious need and relieve a specific pain and have quantifiable markets. अगर आगे कंट्री को सरदर्द की तकलीफ है तो इट वुड मेक सेंस टू लॉन्च अ पिल जो सरदर्द को दूर करती है, राइट? बिकॉज 50% पीपल हैव.
तो पेन किलर्स का क्वांटिफाइबल मार्केट होता है आपका। अगर पेन किलर का प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्टली क्वांटिफाई करके बता सकते हैं कि इतने सारे लोगों को इसकी नीड है, एंड आई एम रिलीविंग दिस स्पेसिफिक, इट्स अ पेन किलर. Vitamin is like additional supplement. So we are getting deeper into the hook model now. We just saw whatever habits. We saw what are vitamins and painkillers. Let's see how the hook model is formed. So these are the absolutely key 4 steps in the model. Actually, first 3 are the very key steps. You can say trigger, action, reward and investment. तो फर्स्ट 3 जो है, ये फर्स्ट ट्रिगर, यू कैन कॉल इट क्यू और ट्रिगर. सेकेंड वन यू कैन कॉल इट एक्शन और रूटीन. थर्ड वन यू कैन कॉल इट एज रिवॉर्ड. ये 3 मिलके एक हैबिट फॉर्म होती है. एंड इन्वेस्टमेंट इज वेयर यूजर कीप्स कमिंग बैक, यूजर डज द इन्वेस्टमेंट. तो ये क्लॉकवाइज ये सर्कल ऐसे चलता है. पहले ट्रिगर आता है, ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में अभी डिटेल में, बट लेट्स जस्ट go through the basics. Let's understand the basics because these steps are important. तो पहले एक ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर से बिहेवियर स्टार्ट होता है ना. जैसे किसी को क्रेविंग होती है और फिर वो उठा के फ्रिज में जाके एक चॉकलेट का बार खाता है वो बंदा, और एक मंच खा लिया और फिर देन ही फील्स हैप्पी, यू नो, हैप्पी हार्मोन्स आर रिलीज्ड. तो ये पूरा ट्रिगर एक्शन रिवॉर्ड, ये आपका हैबिट साइकिल होता है इस स्टेप्स में. एंड दिस इज वेयर द बिजनेस इज लिंक्ड, वेयर यूजर इन्वेस्ट्स एंड कीप्स कमिंग बैक. ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं, ये समझ में आएगा. इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली टाइम, डेटा एंड मनी दैट इज इन्वेस्टेड बाय द यूजर. ट्रिगर इज वेयर अ बिहेवियर, अ स्पेसिफिक बिहेवियर स्टार्ट्स. ट्रिगर में के बाद एक्शन होता है जो यूजर फॉलो कर रहा है, जैसे फ्रिज तक जाना, फ्रिज खोलना, चॉकलेट निकालना और खाना. एंड रिवॉर्ड इज द हैप्पीनेस दैट ही फील्स. तो हम ट्रिगर देखते हैं क्या क्या होता है. तो ट्रिगर, ये 4 स्टेप्स पे हुक मॉडल काम करता है, या ऐप आप कहें, या कोई वेबसाइट कहें, या कोई बिजनेस मॉडल कहें, ये 4 स्टेप्स में काम करता है. First step is trigger. So what are triggers? Now, in terms of triggers, there are 2 kinds of triggers. We'll see. One is external trigger. ठीक है. The other is the internal trigger. External trigger क्या होता है? तो ट्रिगर क्या होता है? सब चीजें ट्रिगर होती हैं. आपके पास एसएमएस आता है, आपके पास पुश नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके पास एड्स आते हैं, टीवी में एड्स दिखते हैं, न्यूज़पेपर आता है, आपको कोई पड़ोसी आके बताता है ये प्रोडक्ट के बारे में, आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल करके बताता है. ऑल दीज आर ट्रिगर्स, ऑल दीज आर एक्सटर्नल ट्रिगर्स, क्वांटिफाइबल ट्रिगर्स. आप बता सकते हैं, आप फोन कॉल कर सकते हैं, राइट? आप फोन कॉल करते ही है. वी डू इनबाउंड कॉलिंग, वी डू आउटबाउंड कॉलिंग, ये सब ट्रिगर्स हैं, ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं. आप कस्टमर को कॉल करके बोलते हैं कि हमारा नया ऐप आया है, डाउनलोड करो, हमारे इस पे जाओ, ये बाय करो. दीज आर ऑल एक्सटर्नल ट्रिगर्स. आप कुछ ट्रिगर इनिशिएट कर रहे हैं जिससे यूजर कुछ एक्शन करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, राइट? तो अभी हम फर्स्ट स्टेप पे देख रहे हैं कि एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होता है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर? टू क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर, टू ट्रेक द यूजर टू एक्शन, टू बेसिकली ड्राइव द यूजर टू एक्शन. हम कॉल करेंगे, बोलेंगे ये क्लिक करो, राइट? तो ये एक्सटर्नल ट्रिगर हुआ. या एसएमएस आया उसके पास और उसको, आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड, स्वाइप टू गेट हील्ड, क्लिक किया, ऐप पे चला गया हमारे, राइट? तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल ट्रिगर हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंटरनल ट्रिगर. इंटरनल ट्रिगर होता है जो अंदर से आता है. बाय द नेम यू सी इंटरनल, राइट? तो इसको हम ट्रिगर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे भूख लगती है किसी को तो हम खाना खाते हैं, राइट? अब फ्रिज में अगर मंच पड़ा है, पूरे फ्रिज में मंच और पर्क और किटकैट, तो आप तो वही उठा के खाएंगे, या केक्स पड़ा है. तो इफ यू फिल योर फ्रिज विद जंक फूड, राइट, then even during internal triggers you will end up eating junk food. सही है? और अगर आप हेल्दी स्टॉक करेंगे और इंटरनल ट्रिगर आएगा तो आप हेल्दी चीजें खा सकते हैं, क्योंकि आपने हेल्दी चीजें भर के रखी है अपने घर पे और फ्रिज में, राइट? तो इंटरनल ट्रिगर क्या होते हैं? जो अंदर से आते हैं, जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, गुस्सा आता है किसी के ऊपर, हंसी आती है, वी फील हंग्री, वी क्रेव समथिंग, वी वांट टू बाय समथिंग. ये सारे इंटरनल इमोशनल नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं. एक्सटर्नल ट्रिगर बाहर से आते हैं.
they basically scam our inboxes. They scam our, they flood our inboxes with unnecessary information. तो ये सारे ट्रिगर्स। अभी हमें समझ में आ रहा है कि क्यों इतने ट्रिगर्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। नाउ हाउ टू यूज दीज ट्रिगर्स, क्या होता है ट्रिगर से? ट्रिगर से हमने देखा कि ट्रिगर से हम यूजर को इनिशिएट करते हैं कोई एक्शन करने के लिए, सो दैट यूजर क्लिक करेगा, कुछ बाय करेगा, कुछ साइट पे जाएगा, राइट, कुछ कॉल आपका उठाएगा, कुछ परचेस करेगा। टिपिकली नेगेटिव इमोशंस आर फ्रीक्वेंटली सर्विंग एज इंटरनल ट्रिगर्स। जैसे आप लेवन हिल के केस में भी देखते हैं, तो जनरली कोई अगर हैप्पी है, हेल्दी है, तो ही डजंट प्रेफर कि मैं हीलिंग लूं या मैं डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को तकलीफ है, कोई किसी को बहुत पेन है, राइट, किसी को हॉस्पिटल में है, राइट, तो दे वांट टू फ्री themselves ऑफ दिस पेन, दे वांट टू बिकम हैप्पी एज सून एज पॉसिबल। नेगेटिव इमोशंस फ्रीक्वेंटली सर्व करते हैं एज ट्रिगर। और इसके साथ जब हम किसी प्रोडक्ट को अटैच करते हैं, फ्रीक्वेंटली फेल्ट इंटरनल ट्रिगर जब प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है, तो यूजर विल ड्राइव टू एक्शन। दिस इज द ट्रिगर प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, एंड वी सॉ हाउ टू यूज देम। तो ट्रिगर को समझने के लिए देयर आर सम क्वेश्चंस हियर, वी विल रीड सम ऑफ द क्वेश्चंस, वी डोंट नीड टू आंसर इट। सम ऑफ दीज क्वेश्चंस वी विल डू ब्रेनस्टॉर्मिंग एज पार्ट ऑफ कीपिंग इट इंटरेक्टिव। आई माइट look for feedback from you guys, we can discuss, and there are other questions as well, but let's see. तो ट्रिगर में you can find out, it would be good to find out who is your product user, कौन यूज करता है आपका प्रोडक्ट, what is the user doing right before the intended habit। आप जिस हैबिट को ट्रिगर बनाना चाहते हैं, उससे पहले यूजर क्या कर रहा होगा। यू हैव टू थिंक ऑफ दिस कस्टमर आवर्स टाइम, वी do more detail on this during the customer discovery model, but just understand this is like thinking about your user, defining a standard user। Which internal trigger does your user experience most frequently? किस इमोशंस में ज्यादा उनको आता है। हाउ कैन यू कपल एन एक्सटर्नल ट्रिगर एज क्लोजली एज पॉसिबल व्हेन द यूजर इंटरनल ट्रिगर फायर्स। जब भूख लगेगी तब स्विगी का मैसेज आना चाहिए, ये कैसे करेंगे आप? हाउ विल यू अचीव दिस? कि आप यूजर निकल रहा है घर से बाहर और उबर का मैसेज आएगा 50% ऑफ। हाउ डू दे मैनेज दिस, राइट? और कूपन्स भी वो लोग देते हैं बेस्ड ऑन अवर यूजेज। तो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग ट्रैक्ड, all of this is being done through AI, all of your data through all the products, most of the products, all the good products is passing through a data analytics engine, is being fed into a artificial intelligence system, especially with big products like Facebook and Google. Everything is being fed into an artificial intelligence system, due to which they are able to generate recommendations at the exact time. They are able to send you coupons and rewards at the exact time. They are very smart, right? So these are the questions that can help you to identify the triggers with your respective product. हम ये क्वेश्चन पूछ के फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह के ट्रिगर्स हमारे यूजर्स को आते हैं। हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में ड्यूरिंग द कस्टमर डिस्कवरी प्रोसेस, बट लेट्स गो ऑन विद द टॉपिक टुडे। तो टुडे इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द हुक मॉडल। ठीक है, हुक मॉडल क्या है? हुक मॉडल एक टेम्पलेट है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स, और यू कैन से एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मेक अ पैटर्न इन योर ब्रेन, आर अटैच्ड टू योर हैबिट्स, सो दैट यू कीप कमिंग फॉर मोर एंड मोर। हम विदाउट सोचे गूगल यूज करते हैं, विदाउट सोचे उबर यूज करते हैं, राइट, विदाउट सोचे अमेजॉन यूज करते हैं, स्विगी यूज करते हैं, बिकॉज दे हैव डोमिनेटेड अवर माइंड्स। यू डोंट थिंक अगेन, विदाउट सोचे जोमेटो यूज करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, दे हैव एब्सोल्युटली monopolize their own specific space in our mind, specific keyword in our mind। तो अभी हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि ट्रिगर के बाद यूजर क्या करता है। इट्स बेसिकली गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग इफ यू सी। तो पहले ट्रिगर आता है, फिर यूजर क्लिक करता है। तो क्लिक में क्या होता है, क्लिक कहें या वेबसाइट पे लॉग ऑन होना कहें, तो देयर इज अ साइंटिस्ट एक्चुअली, इस एरिया में बहुत रिसर्च हुआ है। हमें लगता होगा कि ये मतलब कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा, अरे इस पे भी इतना साइंस है क्या, बट आई एम विद यू इन द सेम बोट, मुझे भी यही लगा है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, सी, वी डोंट नो व्हाट इज बिहेवियरल साइंस। तो इस पे बहुत सारा काम हुआ है। देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज डॉक्टर B.J. फॉग। उन्होंने एक बिहेवियर फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, एंड दैट फॉर्मूला इज B=MAT। वेरी सिंपल फॉर्मूला, आपने देख सकते हैं पिक्चर में। बी बिहेवियर होता है,
M फॉर मोटिवेशन होता है, A फॉर एबिलिटी एंड T फॉर ट्रिगर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो P इज इक्वल टू मैट से हमें क्या पता चलता है कि कोई बिहेवियर कब होता है, जब रेस्पेक्टिव मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर मौजूद होता है। उस सिनेरियो में देयर इज अ बिहेवियर दैट हैपेंस। ठीक है, अ गिवन बिहेवियर will happen when motivation, ability and trigger are present in the same time, in same or in sufficient degrees। तभी ये होता है। इन तीनों में से अगर एक भी शॉर्ट है तो यूजर विल नॉट ट्रिगर दैट बिहेवियर, यूजर विल नॉट डू दैट action, user will not do that behavior. Now we'll see a little, this will not go into the very scientific part of it, but just to understand there is a science behind it। तो ये प्राइमरी हमारे मोटिवेटर्स होते हैं, हमारे सबके। दीज आर ह्यूमन मोटिवेटर्स। ठीक है, आप अगर कोई सीकिंग प्लेजर, राइट, एवरीवन वांट्स दिस, अवॉइडिंग पेन, सबको चाहिए ये, राइट, पेन किसी को भी नहीं चाहिए। सीकिंग होप, तो यू वांट टू सी इन द इनटू द फ्यूचर, यू वांट टू अवॉइड द फियर। आप हर एक को सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, सोशल रिजेक्शन नहीं चाहिए हर एक को, राइट। ये सबके साथ कॉमन मोटिवेटर्स होते हैं। तो आप अगर इनके अराउंड प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो यू नो योर प्रोडक्ट हैज कैन बी अटैच्ड टू दीज डिफॉल्ट मोटिवेटर। अगर आप सोशल एक्सेप्टेंस, फेसबुक क्या करता है, फेसबुक इंक्रीजेस योर सोशल एक्सेप्टेंस, इट्स अ सोशल फॉलोइंग, सोशल डोमेन फॉलोइंग प्रोडक्ट, अवॉइडिंग सोशल रिजेक्शन। तो ये प्राइमरी मोटिवेटर्स होते हैं। बिहेवियर के बारे में हमने देखा, एंश्योर अ क्लियर ट्रिगर प्रेजेंट। बिहेवियर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बिहेवियर होने के लिए ये तीन चीजें होनी चाहिए जो हमने पीछे देखी। ठीक है, व्हाट इज एबिलिटी? एबिलिटी इज टू बी एबल टू क्लिक दैट टाइम। जैसे हम बहुत सिंपल एग्जांपल से, वही मैसेज वाले एग्जांपल से समझते हैं कि हमें भूख लगी है और आपको स्विगी का मैसेज आता है कि 20% ऑफ। तो बिहेवियर होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। मेरे पास मोटिवेशन होना चाहिए खाने का, खरीदने का, और एबिलिटी होनी चाहिए टू बी एबल टू क्लिक दैट मैसेज एंड मेक द पेमेंट और कंप्लीट द ऑर्डर। एंड देन आई शुड हैव अ राइट ट्रिगर। सो ट्रिगर इज देयर, द थर्ड पार्ट, पी इज इक्वल टू मैट। फिर से देखते हैं फॉर्मूला। Trigger is the message that came. Ability is my being able to click and make the order, and motivation is my hunger, like I'm feeling hungry. Then a behavior will happen. A customer will click on the message and actually make the payment and buy the product, or basically order food in this example. तो एबिलिटी में क्या आता है? एबिलिटी में साइंटिफिकली वो बताते हैं कि आपके 6 फैक्टर्स पे डिसाइड करता है कि आप कोई काम कर सकते हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन द टाइम चैलेंजेस, मनी चैलेंजेस, फिजिकल एफर्ट, ब्रेन साइकिल्स। इट कुड बी टू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, आप देखते हैं और आपको समझ नहीं आता है, मैसेज इतना कॉम्प्लेक्स था कि आपने क्लिक की, आपको समझ में नहीं आया क्या कर रहा है मैसेज, लाइक यू रेड द मैसेज एंड बट इट्स नॉट वेरी क्लियर। सोशल डिवाइंस, यानी आउटसाइड द नॉर्म। कुछ लोग जनरली आप देखते हैं लाउड लैंग्वेज यूज करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स लाउड क्लेम्स करते हैं, राइट, गेट दिस ट्रेजर इन वन डे एंड ऑल दैट। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू जस्ट ब्रेक द नॉर्म, दे वांट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। Sorry, I non-routineness is too new. They launch something new because the mind craves novelty. It craves the newness. New होता है तो हम attract होते हैं. And then what is the next part in the ability? To be able for someone to click and make that order or make that step happen. Reducing number of steps to complete the outcome increases the likelihood of the outcome. तो अगर आपने ऑर्डर करने के लिए आपको 4 स्टेप्स लगते हैं स्विगी पे, अगर आप मैसेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप होम पेज पे जाएंगे, फिर आप एड्रेस भरेंगे, फिर आप यू अप्लाई द कूपन एंड देन यू सर्च द रेस्टोरेंट एंड यू सर्च द फूड, और समझो आपको 7 स्टेप्स लगते हैं ऑर्डर करने के लिए, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम बाय दिस पॉइंट, इजंट इट? तो अगर 7 स्टेप्स लगते हैं तो आपको ऑर्डर, देयर आर सो मेनी चांसेस दैट कस्टमर विल गो अवे विदाउट ऑर्डरिंग, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, वन क्लिक ऑनबोर्डिंग रखते हैं, वन क्लिक ऑर्डरिंग रखते हैं, वन क्लिक बाइंग एक्सपीरियंस रखते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस द स्टेप्स बिटवीन द एक्शन and the user's ability. They want to increase that basically probability of the click. This is the ability in that formula. P is equal to math. Questions. So there is one question on this we can ask to understand which resources are limiting your user's ability to accomplish the tasks that will become habits. जैसे बुक लगती है और स्विगी से कोई ऑर्डर कर रहा है
एंड देन बट उसके फ्रिज में हेल्दी स्टॉक भरा हुआ है, और घर में कोई है जो बोलेगा कि डोंट ऑर्डर दिस, ओपन द फ्रिज एंड ईट दिस. So this is one thing which is limiting the ability to make the order. We can generally ask this question that what are the impediments? ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो यूजर को लिमिट करते हैं क्लिक करने से. ठीक है, तो पहले हमने देखा ट्रिगर. ट्रिगर के बाद एक्शन होता है. एक्शन में हमने देखा कि एबिलिटी होनी चाहिए एक्शन करने के लिए, मोटिवेशन होना चाहिए, और एक उसके लिए ट्रिगर होना चाहिए. अब हम देखेंगे रिवॉर्ड क्या होता है. ठीक है, रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट दे गेट, व्हाट हैपेंस व्हेन दे क्लिक, व्हाट हैपेंस व्हेन दे डू द ऑर्डर फाइनली. तो रिवॉर्ड को वेरिएबल रिवॉर्ड भी बोला गया है यहाँ पे बिकॉज इट इज वेरिएबल. कम भी होता है, ज्यादा भी होता है. देयर आर वेरियस वेज टू डू इट. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स एसेंशियली. देयर इज रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज रिवॉर्ड्स ऑफ द हंट, एंड देन देयर इज रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ. ठीक है, ट्राइब होता है जब हम ग्रुप में काम करते हैं. सोशल एक्सेप्टेंस हमने देखा पहले. फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन, और लेट्स से अवॉइडिंग सोशल रिजेक्शन. हम ट्राइब एनिमल्स हैं. वी आर होमो सेपियंस, राइट. वी लिव इन द सोसाइटी, वी लिव इन अ कल्चर. So there are people that affect us. There are people we compare ourselves to. There are people who influence our decisions, right? There is a community around every good product. Facebook, you want to talk to the other people on the Facebook through the wall, right? Similarly, on Instagram, you want other people to comment or like your pictures. One person cannot do anything, right? So there are rewards of the tribe. There is gratification from the other. Someone throws you a compliment, right? You feel happy. आपको अच्छा लगता है. Similarly, someone throws a compliment on your picture on Facebook. आपको अच्छा लगता है. Same thing. So there is a reward that Facebook is offering. You can see right there and there. There is a reward of the tribe that Facebook offers. और भी रिवॉर्ड हो सकते हैं. यस, सारे हो सकते हैं. यस, देयर आर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर ऑल काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स. दे आर सो हुकिंग, they are so brilliantly designed that they really offer you so much in anticipation. They offer you so much on usage that you are hooked for a long time. रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब हमने देखा. देन रिवॉर्ड्स ऑफ द हंट क्या होता है. हंट से हमें पता है हंटिंग का ख्याल आता है. वी स्टार्टेड फ्रॉम एप्स एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम बारबेरियंस. हंटिंग इज हंटिंग. यू हंट फॉर मनी, यू हंट फॉर information, you hunt for material goods. When you click on Google and you want to read about something, आप कोरा पे जाते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं. यू आर हंटिंग फॉर information, राइट. यू आर हंटिंग फॉर गुड्स. यू गो टू Amazon, you buy something. आपके घर पे कुछ खत्म हो गया, you want to buy something, you have a craving to buy something, you buy it. It's a material good craving. You reward for a hunt. And so is with money. People want to play rummy online. People want to earn money. People want to make money through apps or through business channels or through websites. This is the reward of the hunt. आपने हम चारों तरफ देखते हैं इस तरह के एप्स, तो ये आप इजीली इस पे रिलेट कर पाएंगे. ठीक है. रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ, इसमें क्या होता है. मास्टरी, कॉम्पिटेंस, कंप्लीशन. यू फील बेटर, यू आर गेटिंग बेटर एवरी डे. देयर इज अ ऐप which tells you to walk, right? It makes you fit. So there is a reward you are feeling. You're seeing, I have walked 10,000 steps today. There is an app that tells you, okay, I've reduced my food consumption, my heart rate is this, my pulse rate is this. Ye reward of the self. You feel better, you want to make yourself better. There are some techniques to achieve this. ये रिवॉर्ड्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या ये रिवॉर्ड्स, इस तरह के रिवॉर्ड्स से प्रोडक्ट्स हमें कैसे हुक करते हैं. क्या टेक्निक्स हैं उस इंडस्ट्री में, राइट. क्या क्या होता है, किस चीज पे वो फिश करते हैं हमें, किस चीज पे हम अटकते हैं. व्हाट इज द कॉज ऑफ वी बीइंग हुक टू इंस्टाग्राम फॉर और जनरल गाय, लेट्स से whoever is hooked to Instagram, let's say, why is he hooked? What does he get? What does he get on Facebook? What does he get on Wikipedia? What do you get on IMDb? तो देर आर सम टेक्निक्स. तो ये टेक्निक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. अब ब्रेन्स क्रेव नॉवेल्टी.
हमारे ब्रेन्स को बोरियत महसूस होती है. वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम रूटीन. वी वांट समथिंग न्यू इन एवरीथिंग. हर दिन कुछ नया चाहिए, राइट? ऐड में भी नया होना चाहिए, खाने में भी नया होना चाहिए, पहनने में भी नया होना चाहिए, शॉपिंग में भी नया होना चाहिए. एवरीथिंग इज न्यू. आपको सेम सेम चीज आता है तो ब्रेन विल स्पॉट, ओ इट्स द ब्रेन विल फॉल asleep. It will fall into the repeated pattern. It will fall into the habit. It wants to crave novelty. तो ये एक टेक्निक यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स. वो नई तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं. दे कैच योर नोवेल्टी सेंटर. देन देयर इज अ गेमिफिकेशन थिंग. गेमिफिकेशन में क्या होता है? गेम्स आते हैं बहुत सारे. एज ऑफ एम्पायर्स है, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट है. पीपल गेट एडिक्टेड टू दिस games, but you are free. This is a philosophy where they tell us you are free to choose, but we have not actually, right? बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि यू मे चूज टू डू द परचेज और यू डोंट, राइट? बट यू आर फ्री टू चूज और नॉट. तो इस तरह का ये लोग इस तरह का हुकिंग यूज होता है. देन एक्सपीरियंस टेकिंग. एक्सपीरियंस टेकिंग इज अ प्रोडक्ट जिसमें यू रियली कैच योर ब्रेथ. इट्स सो नाइस, इट्स सो नोवेल्टी, इट्स सो नाइस एक्सपीरियंस. इट्स सच अ न्यू कॉन्सेप्ट कि इट इज लाइक ब्रेथ टेकिंग. आप ऊपर पे जाते हैं, इट्स लाइक ब्रेथ टेकिंग, राइट? यू सिट ऑन दिस, राइट? इट्स लाइक दैट. देन इनहेरेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट्स क्वाइट अ माउथफुल. लेट मी डीजार्गनाइज इट. इनहेरेंट और इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबिलिटी क्या होती है? तो वेरिएबिलिटी यानी चेंज होना, है ना? जैसे हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो अगर कोई ब्लॉगर है जो सेम ही आर्टिकल लिखता है या सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स लिखता है तो हम बोर हो जाएंगे. सो देयर इज अ वेरिएबिलिटी ही इंट्रोड्यूसेस. वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता है. कोई फिल्म स्टार है तो ही जस्ट ट्राइज डिफरेंट जॉनर्स. ही, राइट, ही अदरवाइज ही विल बी टाइप टू अ विलेनस रोल और अ कॉमेडी रोल. और तो वो लोग वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं. यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ वर्सेटिलिटी. इनहेरेंट यानी ऑटोमेटिक. जैसे कोरा का जो बिजनेस मॉडल है, कोरा हमें काफी सारे लोगों को पता है. कोरा पे हम क्वेश्चन का आंसर अपलोड करते हैं, आंसर्स लोग वहां पे डालते हैं. तो कोरा का जो कंटेंट है वो कौन बनाता है? कोरा के यूजर्स बनाते हैं, राइट? तो ऑटोमेटिक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है. तो कोरा को रोज रोज नया कुछ आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं है. डेली कंटेंट जनरेट होता है, रैंडमली जनरेट होता है, एंड यूजर्स ही बनाते हैं वो कंटेंट. तो आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि you are allowing people to do guest blogging for you. People are writing your content for you. This is inherent variability, inherent versatility. Introduce variability क्या होती है? कि मंथली आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, वीकली कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, उसी प्रोडक्ट को नए नए ऑफर्स लेके आते हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट? टू इंट्रोड्यूस novelty and to stop your users from getting bored and to introduce the versatility. So these are some of the techniques that products use to cash on us. They introduce these techniques to make sure we buy, to make sure we get the reward, to make sure we are hooked. तो ये रिवॉर्ड्स हमने देखा, हमने ट्रिगर देखा है, एक्शन देखा है, रिवॉर्ड देख रहे हैं अभी हम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट. हाउ यूजर्स पे बैक. नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेट एरिया. अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट हैज डन सो मच ऑफ वर्क to establish all those things right so that we continue to come to the product. हम आते रहे हैं ये करने के लिए, प्रोडक्ट को ये सब किया है. अब इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? आइकिया इफेक्ट, राइट? आइकिया क्या करता है? आइकिया इफेक्ट इज नथिंग बट दे सेंड यू फर्नीचर बट इट इज डिसअसेंबल्ड. They send you screws and they send you this thing, instructions. So IKEA effect is your users are doing the work. Now because users are doing the work, they are attaching their time and emotion to it. आप अगर किसी फर्नीचर को या अपने बच्चे के स्टडी टेबल को खुद असेंबल करते हैं तो you get a certain affection with it, right? So this is nothing but a very smart way of attaching the user to their product by not doing the assembly. They are doing three birds with one stone here. वो पैसे भी बचा रहे हैं to save it assembly, वो ट्रांसपोर्ट भी बचा रहे हैं और वो यूजर को इमोशनली अटैच भी कर रहे हैं. सो दिस इज IKEA इफेक्ट. बी अ सेफ ड्राइवर. ये हम टैक्सीज पे देखते हैं, राइट? हमने देखा है काफी सारे लोगों ने उबर टैक्सीज पे या कंपनी टैक्सीज पे लिखा रहता है कि इफ आई एम ड्राइविंग रैश कॉल दिस. तो ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है कि हम ट्रैफिक सेफ्टी बचा रहे हैं, राइट? हम एक्सीडेंट्स बचा रहे हैं. दिस इज अ वेरी फेमस स्लोगन. बी अ सेफ ड्राइवर इज अनदर स्लोगन दे यूज लाइक दिस, कि ड्राइवर्स एक दूसरे के लिए स्टिकर लगाते हैं कंपनी टैक्सीज पे कि बी अ सेफ ड्राइवर और कॉल दिस नंबर.
So the idea is labor leads to love. हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ उतना हमें इट हुक्स अस. The only solution is to keep playing, to keep paying, to keep playing. There are games like World of Warcraft and there are games like GTA and there are games like PUBG, right? हमने कुछ नाम सुने भी होंगे. They are so addictive, and then they start charging you so much money at some point of time in terms of upgrades, in terms of rewards, in terms of points and such, कि आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आगे खेलना है, right? But then you keep paying to keep playing. You are hooked so much by then. एक एक typical game packages go into so much amount that we will all be basically bewildered. People pay lakhs of rupees, you may not believe me, to just buy game points, to buy, stupid things like Zynga poker coins, and they will play, and they will actually invest money. Why so happens? Because of hooked model. Okay, so this is investment. How users get attacked, how users attack the product back. Product ने अपना काम कर दिया, एक hook बना दिया. Now users are investing. Users are spending their time and money. They are paying back to the company now. Storing value. Stored value से क्या होता है? जब आपके प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू होती है तो ज्यादा लाइक्लीहुड है इट विल बी यूज्ड अगेन. एज सिंपल एज दैट. इफ योर प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल, you are really helping the customer getting something in their lives, right? You are creating some useful content, let's say. You are sharing some useful data. You are leveraging the followers, social reputation, and learned skills. These are things user have invested in your product. अगर किसी ने फेसबुक पे 1 साल अकाउंट बनाया है और उसके थ्रू कुछ स्टार्ट किया है, लेट्स से समवन हैज स्टार्टेड डांसिंग क्लासेस, ठीक है, किसी ने कोई अपना पर्सनल कोचिंग स्टार्ट किया है डांस का, और 2 साल 1 साल फेसबुक पे मेहनत करके ही हैज बिल्ट अप फॉलोअर्स, ही हैज बिल्ट अप कंटेंट, ही हैज बिल्ट अप रेपुटेशन देयर, राइट? नाउ ही डजंट वांट इट टू गो फॉर वेस्ट. तो अगर फेसबुक उसको बोलता है कि आप कल से मुझे 3,000 रुपए मंथ दो एंड आई विल रन योर एड्स, और 3,000 रुपीज पर डे आप मुझे दो, माय बैड, and then I will run your ads, the person will be ready because he has already invested in building so much of reputation, so much of followers. So this is like creating a value. This is part of investment sector only. User यूज करने की वजह से कंटेंट क्रिएट करता है और उस कंटेंट की वजह से इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन नाउ. अब आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है फेसबुक पे, इतने सारे आपने एसेज लिखे हैं, इतने सारी पोइट्री लिखी है, इतने अच्छे अच्छे फोटो शेयर किए. सो यू डोंट वांट इट टू लेट गो, राइट? इट्स डिफिकल्ट टू शिफ्ट, इट्स डिफिकल्ट टू क्लोज. तो ये वैल्यू यू हैव क्रिएटेड योर वैल्यू, नाउ यू आर स्टक बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू. ओके, और क्या इन्वेस्टमेंट में आता है? इन्वेस्टमेंट में एक और पार्ट आता है विच इज लोडिंग द ट्रिगर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोडिंग द ट्रिगर इज लाइक लोडिंग द ट्रिगर, नेक्स्ट ट्रिगर ऑफ द गन, राइट? यू मस्ट, दिस इज लोडिंग द नेक्स्ट ट्रिगर ऑफ द कस्टमर. हमने ट्रिगर देखा था, तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा करता है कि आपको दोबारा नेक्स्ट ट्रिगर पहले से ही लोड हो जाता है, ठीक है? जैसे कि समझिए देयर आर थिंग्स दैट इंस्टाग्राम डज, प्राइवेट, जैसे आपने कोई फोटो शेयर किया एंड देन समबडी रिप्लाइज यू बैक, या इट यू गेट, you basically favorite that photo, and because of that Instagram artificial intelligence system knows that you like such kind of photos and it will start showing you more of those categories and photos. So ये this is like loading the trigger. जैसे किसी ने बोला मुझे पाइथन सीखना है, right? As simple as that. We have taken lots of social example. Let's take a learning another kind of example. कोई बोलेगा मुझे पाइथन सीखना है and he wants to utilize YouTube or Stack Overflow and all these sites or the Python tutor to learn. So these recommendation engines, these same basically trigger engines, उसको Python के लिए ट्रिगर करेंगे. जैसे he has decided on, तो वो एक बार सेव कर देगा कि मुझे I want to see questions and categories for Python and data and machine learning and such. तो उसको Python के रिलेटेड चीजें दिखती है वहां पे. So users are being triggered again. उनको फिर से मैसेज आ रहा है कि देयर इज अ न्यू कोर्स ऑन पाइथन, देयर इज अ न्यू चैप्टर अवेलेबल, देयर इज दिस अवेलेबल, देयर इज दैट अवेलेबल, राइट? सो इट्स द नेक्स्ट ट्रिगर. इट इज लोडिंग अ ट्रिगर ऑलरेडी फॉर द फ्यूचर. योर प्रोडक्ट इज सो स्मार्ट, it is not just loading a trigger for the present, it is loading a trigger for the future as well. This is a category of a smart product. Now there are some logos. These are very famous apps.
काफी सारे पता है आप लोगों को, आई होप इसमें से, राइट। जो नहीं पता है एक दो मैं बताता हूँ उसमें। फॉर एग्जांपल टिंडर इज, लेट्स नॉट टेक टिंडर, लेट्स टेक फिटबॉट। तो फिटबॉट इज एन ऐप। जैसे कई सारे एक्सरसाइज डूअर्स होते हैं, राइट। तो नए लोग जो होते हैं तो वो जिम में जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है। एंड यू नो जिम trainers are very costly. If you hire a single trainer for a single person, they charge hell amount of money. They charge like 50K. Let's say your gym fees is 10K. The personal trainer cost is into 6 times. He'll charge you 60, 50K extra for some basic guidance and suggestion throughout the year. तो कई सारे लोग they spend a fortune hiring a personal trainer. तो Fitbot क्या करता है? Fitbot is an app. It got famous with this hook model. तो फिटबॉट क्या करता है? फिटबॉट विल शो यू व्हाट नीड्स टू बी डन इन टर्म्स ऑफ सिंपल चंक्स। जैसे एक स्टेप्स आते हैं, 10 रिपीटेशन पेंडिंग फॉर डेडलिफ्ट्स, 10 जंप्स पेंडिंग, 10 स्क्वाट्स पेंडिंग। और जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाता है वो वैसे वैसे गेम की तरह वो खत्म होता जाता है। सो बेसिकली यू ओपन द ऐप एंड देन यू आर ऑलरेडी गाइडेड। आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आपको पहले वार्म अप करना है, देन यू हैव टू डू एरोबिक्स, देन यू हैव टू जंप, देन यू हैव टू डू बाइसेप्स एंड देन एंड सो ऑन। तो वो आपको सब बता देगा ऐप। और मजे की बात यह है कि आप अगर बीच में सो गए, 2-3 दिन जिम नहीं गए, तो ऐप उस हिसाब से इट विल डू द एआई, इट विल डू द मैथ एंड देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर मे बी। So they have leveraged this technology to start filling in AI-based trainers, let's or guiding you. So this is one concept utilized by Fitbot. It's a very hooking in terms of people who are exercising towards and who want to go to gym and who don't know what to do, basically. And then most of the other apps we already know. We know Pinterest. Pinterest shows you scrollable pictures of ideas pinned by different people. It's very, very addictive. So all these are hooking apps. These are some of the good examples of the hooking apps. Now let's see some new part. Now we saw what is hook model. We saw how habits are formed. We saw how we are being persuaded. Now you know, right? You must have guessed by now. या आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आया होगा कि अगर इतना मैनिपुलेशन हो रहा है तो then how are we free, right? Then why we are being tracked basically at every place. They are tracking our data. They know what we are doing. knows everything. So the answer is yes. Most of the places that case is there. And with it, we need to also understand the morality. What are the moralities involved in building such products? What is the morality involved in basically giving permissions out as a user? अब दो तरह से यूज करते हैं ना, एक तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, वी आर मेकिंग अ लव एंड हील मी एंड कंपनीज विल मेक प्रोडक्ट्स, सो देयर आर कंपनीज, and then on the other side there are consumers, because we ourselves, each of us, are consumers of so many products, so we are also responsible from that angle. What permissions are we giving to people and how do we safeguard us? तो दोनों तरफ से सेफ्टी होती है। कंपनी की तरफ से क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है प्रोडक्ट के लिए, because we are all in the persuasion business after all. So where we should not cross the line, let's say for example, and then as a user where you should know you are being fished or where you should put a boundary. So it's a very interesting, let's see how it happens. तो यहाँ पे ना 4 zones होते हैं। मैनिपुलेशन मैट्रिक्स करके एक होता है, यू कैन इमेजिन इट एज अ मैट्रिक्स, 4x4 quadrant. Facilitators, peddlers, entertainers and dealers. So the author of this course has charted them out into 4 categories, the companies or the apps. Let's see facilitators. Facilitators are good products, like people that owners will also use. Let's say, for example, Larry Page himself would use Google, right? Or Mark Zuckerberg would use a Facebook, or will he? Yeah, I don't know. So facilitators will be the products where founders will use the products for themselves as well. And they are good products and they are useful products. What are peddlers? Peddlers are typically junk. Typically, they claim, our work to be done suddenly turn hard work into fun. So peddlers are typically fitness apps, because fitness will not come through the app. If there is an efficient tracking mechanism like we saw with Fitbot,
Yeah, it's a different thing. It's useful for the people. But what about charity websites? What about charity people who keep calling us for money, right? They just want to raise money. कुछ देते भी नहीं है एनजीओस का, हमें दिन भर कॉल आता है, हमारे ऐप पे जाओ, हमारे वेबसाइट पे जाओ, ये पैसा दो, वो पैसा दो, राइट? व्हाई शुड वी गिव, राइट? So they are basically peddlers. They are playing with us. We don't know. They just get our numbers from so many places, or we may have donated in the past, but data is being sold in the market, and then they call you. They get your number and then they call you. They try to fish you for money. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ. I'm basically, don't get me wrong. I'm not saying NGOs are bad. I'm also not saying they use this money for bad reasons. But I'm saying they are peddlers. They fall into the peddler category. They are charity websites fall into that category. Now there is something called as entertainers. Entertainers are again quadrant में कहाँ आता है कि owners would also use, owners in the sense founders, or would also use the app, let's say for gaming, but then they are not adding any value to users life. फैसिलिटेटर में क्या होता है कि ऐप प्रोडक्ट अच्छा भी है, यूजफुल है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है. पेडलर में क्या होता है कि दे आर टिपिकली स्कैमिंग यू. एन ओनर एंड फाउंडर वुड नॉट यूज देयर ओन प्रोडक्ट डेफिनेटली. दे जस्ट वांट टू फिश यू, द यूजर्स. एंटरटेनर्स में क्या होता है, लाइक गेम्स एंड रोलेट एंड रमी एंड ऑल दीज गेम्स where they are entertaining. They are casinos, teen patti, poker and all that, right? So they are entertainers, but they don't necessarily improve your life. And the fourth and the most fishy and you can say reprobating or bad category is the evil category is the dealers. They are typically the bad part, the where we are supposed to avoid such apps. Even if you want to go to a fitness app, but basically never go to app that will steal your data, like for example, right? Or let's say drug dealing apps or casinos apps or dark web apps and such kind of things, where you completely have no amount of trust that you can place on that person. He will absolutely brutally, they can, and do anything with your data. So this is absolutely bad category. This is manipulation metrics tells us the morality of manipulation, where people fall and where companies typically fall, different kinds of apps. तो इससे ये पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के एप्स हम यूज करते हैं, किस तरह के कैटेगरी में वो फॉल करते हैं. I think we are there in the session. I'm hoping this is the last slide. If not, so we'll see. I think this is the last one. So these are the questions. Let's see. These questions will summarize the entire PPT, and then we will open up for questions. 5 minutes we can discuss the feedback. So what do users really want? तो हमने देखा ट्रिगर होता है. तो ऊपर का क्वेश्चन इज लाइक इंटरनल ट्रिगर. इट विल टेल यू व्हाट इंटरनल ट्रिगर योर यूजर गोस थ्रू. What does the user really want? What is the pain what pain is your product relieving? Sorry. What brings user to your service? This is external trigger. कैसे लाओगे आप यूजर को? आप एसएमएस भेजोगे, आप उनको फोन करोगे, आप उनको चिट्ठी भेजोगे, क्या करोगे? फैक्स करोगे? You will make them talk word of mouth to other people to make it viral. क्या करोगे आप? So that is external triggers. All these the channels that you will utilize, the triggers that you will utilize. Third is, what is the simplest action? We saw trigger के बाद action होता है. So what is the simplest action in anticipating the reward that user can take through your app? हमारे केस में क्या है? Swipe to get healed. That is the action, right? The swipe action is the action in 11 heal, for example, if you want to relate to it. Now, what is the reward? Are users fulfilled by the reward, yet left for wanting more? It's like an ice cream. The more you eat, the more you want, right? So variable reward, उसको कहा गया. So, and then the fifth piece of work is investment. What bit of work do user invest? How do they get hooked? Does it load the next trigger? So ये 5 questions is like a template for any product, not just for us, but this is a takeaway for all of us that we are working with products as consumers, as a team, as a company as well. So these questions are nothing but the compass to help us understand. Okay. And I hope this is the last one. Yeah. That's it.